Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am back with another hairstyles video. These hairstyles are super easy, super quick, and you can wear them anywhere you like. Before starting the video, I would like to request you all to please like and do subscribe. Most of my viewers are non-subscribers and that is not cool. I put in a lot of effort and time into these videos. You can put a little effort and subscribe. So yeah, with that, let's just begin. This hairstyle is so easy, it is literally going to take 3 to 4 minutes max. I'm just going to take a strand of my hair और उसको मैं अपने बाकी बालों से सेपरेट करूँगी एंड इसके बाद मैं अपने जो फ्लिक में रखती हूँ उसको सेपरेट करूँगी अपने बाकी बालों से एंड आई एम गोइंग टू पिन अप माई हेयर. जो हेयर स्ट्रैंड मैंने अलग किया था अपने बालों से उसको मैं 2 सेक्शंस में स्प्लिट करूँगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ट्विस्ट दीज 2 सेक्शंस अराउंड. बालों को मैं थोड़ा सा पुल आउट करूँगी ताकि थोड़ी सी मोटी लगे मेरी ये ट्विस्टेड काइंड ऑफ ब्रेड. इसको मैं अपने सर के ऊपर से गुजार के दूसरी साइड पे ले जाऊँगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पिन इट अप एंड डन विथ हेयर स्टाइल. Hairstyle number 2 is literally one of my favorite hairstyles क्योंकि ये बन के इतना प्यारा इतना trendy लगता है. You guys will see. I'm going to take a section of my hair from the top of my head. फिर उसमें से मैं एक section पिन अप करके सेपरेट कर दूँगी क्योंकि वो मुझे एंड में यूज़ करना है. वो जो दूसरा सेक्शन है उसको मैं 3 strands में डिवाइड करूँगी. Let's say top, middle and lower strand. I'm going to pass top strand under the middle strand. Then I'm going to pass the lower strand under the middle strand. Then I'm going to add hair to the lower strand and I'm going to pass it under the middle strand. Then I'm going to add hair to the top strand and I'm going to pass it under the middle strand. By now you must have understood that I'm going for a touch braid here, so I'll try to explain it in Urdu as well. मैं लोअर स्ट्रैंड में बाल ऐड करूँगी और उसको मिडिल स्ट्रैंड के नीचे से पास करूँगी. फिर मैं अपर स्ट्रैंड में थोड़े बाल ऐड करूँगी और उसको फिर मैं मिडिल स्ट्रैंड के नीचे से पास करूँगी. मेन चीज़ ये है कि टॉप और लोअर स्ट्रैंड में बाल ऐड करने के बाद आपने मिडिल स्ट्रैंड के नीचे से गुजारना है. इसी से आपकी टच ब्रेड बनेगी, अदरवाइज़ ये फ्रेंच ब्रेड बन जाएगी. दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अ टच ब्रेड एंड अ फ्रेंच ब्रेड. Then I'm just going to complete it like a normal braid. फिर मैं अपने बाल pull out करूँगी ब्रेड को थोड़ी बड़ी लुक देने के लिए. And yeah, that would be it for the Dutch braid. I'm just going to pin up the Dutch braid. इसके बाद जो मैंने section pin up किया हुआ था separately, उसकी मैं simple 3 strand regular braid बनाऊँगी. And that is super easy. I don't think I have to explain that. सिंपल ब्रेड को मैं अपनी डच ब्रेड के बिल्कुल मिडल में रख के पीछे ले जाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू पिन इट अप विद द डच ब्रेड एंड यू हैव योर हेयर स्टाइल.
For hairstyle number 3, it is going to be somewhat semi-Dutch braid. I'll show you how. I'm going to take a section of my hair from the top of my head and I'm going to split it into 3 strands. I'll pass the upper strand under the middle strand, then I'm going to pass the lower strand under the middle strand. Then I'm going to add hair to the lower strand and I'm going to pass it under the middle strand. And I'll be adding no hair to the upper strand. I'm just going to simply pass it under the middle strand. And again, I'm going to add hair to the lower strand, pass it under the middle strand, and then just pass the upper strand under the middle strand. So you just have to add hair to the lower strand. Do not add hair to the upper strand. If you want to do that, you can do that as well, but in this hairstyle I'm not doing that. So I'll just keep repeating the steps, and at the end I'm just going to complete it like a normal regular braid, and I'm going to repeat the same on the other side of my head, and you'll see how cute it will turn out. For hairstyle number 4, I'm going to take a strand of my hair, like you can see, बिल्कुल अपने कान के पास से नीचे से, and इसकी मैं regular braid बनाऊंगी, regular 3-strand braid, and yes, that would be it. I'm going to do the same on the other side of my head. You will see in a bit. रेगुलर ब्रेड बनाने के बाद आपने इसको सही तरह पुल आउट करना है, इसी से इसकी प्रॉपर लुक बनती है, अदरवाइज़ बहुत पतली सी ब्रेड होगी एंड प्रॉपर लुक नहीं आएगी. देन आई एम गोइंग टू टेक द ब्रेड एंड पास इट over my head and pin it up on the other side, and I'm going to do the same with the other braid. Pin it up nicely and neatly, otherwise the hairstyle will look a bit messy. And you are done. Such a cute trendy hairstyle in under 4 minutes. Isn't that cool or not? Well, that's it for today, guys. Let me know in the comments which hairstyle was your favorite and what else do you want to see on my channel. I'll be back with another video very soon. So guys, I hope you enjoyed the video and liked the hairstyles. Do not forget to comment, do subscribe, and I will see you guys in the next video. Take care of yourselves.